So like scuba diving is something I absolutely love. Like take I'm very very passionate about it, and I think everyone should try it and maybe do it more than once. Don't do it just for taking pictures. Once you get into it as a lifestyle, you are just amazed by the beauty of the world underwater. Just being able to breathe underwater, just that feeling, oh fuck, pani ki. And then there's like puffer fishes. They have an individual personality. You can watch this BBC ka video where puffer fish will make an art on the sand floor. During reproductive season, they will actually make an art to attract the female. Hi guys, today we have a very special guest, Mr. Tarun Jain. Hi Tarun, how are you? Welcome to All Pundits. Hey Arpan, thanks for having me. Sure. Let's start. Before we delve deeper into what your life has been, I wanted to give a quick intro to my audience, and that is like Tarun Jain, is a true modern day adventurer who has traversed the world on a journey of self-discovery and exploration. Tarun is a scuba diving instructor, a digital nomad, and a passionate advocate of pursuing one's dream and passion. He has led life full of adventure, taking risks, and challenging norms. From bachelor's in mechanical engineering from IIT Guwahati to dropping out a PhD from University of Auckland, Tarun has set out to discover a life that he loves, one that takes him to the depths of ocean to the peaks of Himalayas. His digital nomad life has allowed him to explore the world on his terms, immersing him in new cultures, embracing the unknown. Join us today as we delve deeper into his life and learn about the challenges he has faced and the lessons he has learned throughout his journey. Discover how he has been able to turn his passion into a fulfilling life full of adventures and exploration. Hi Tarun, once again. Thank you for agreeing to do this and coming to our All Pundits podcast. And let's start with few things. First of all, थोड़ा सा मुझे ये क्लैरिटी दे दो, पीछे का बैकग्राउंड है या सही में आप पूरा सीवी दिख रहा है एकदम? बैकग्राउंड नहीं है, मतलब एक्चुअल व्यू है मेरा ये. I live on a beach and you can see the Patong Bay from here, and literally I can just walk down, swim for 100 meters, and there's a beautiful coral reef. And yeah, I'm just blessed to be living here at this moment. So आपका जो अनकन्वेंशनल करियर पाथ था उसमें सबसे पहला पॉइंट मेरा जो ड्रॉपिंग आउट ऑफ PhD दैट यू चोज आफ्टर योर लाइफ एट IIT गुवाहाटी एंड परस्यू करना था आपको काफी हद तक एक पैशन बोल लूं या लाइफस्टाइल बोल लूं about scuba diving, about different other things. What inspired to take you that? And how did you navigate the uncertainty and potential risk during this time? So like dropping out of PhD, especially when I was in a different country, definitely it's a very difficult decision. So if anybody else, like job छोड़ना, PhD drop out करना, college से drop out करना, ये सब थोड़े बड़े decision होते हैं, and of course you get it affects you while you're taking the decision. तो अभी hindsight में मेरे लिए काफी easy है बोलना, ठीक है, but I remember during that time there was a lot of factors into play. It was not just like कि मुझे ये करना है इसलिए PhD छोड़ दी. It's never that easy. It's not never that singular, right? Like from my family I had no pressure, so that was good. My family was not like you have to do PhD. They were rather happy if I came back to India. मेरी बंदी भी इंडिया में थी उस टाइम पे, and most importantly मेरे सारे दोस्त, this was the time around 2014-15 की बात है जब राहुल यादव का टाइम था. housing.com हर जगह बूम था. तुम IITian हो, तुम बस आइडिया लेके आओ और करोड़ों रुपए लेके जाओ फंडिंग. तो एक वो वाला टाइम था, एंड तब मैं PhD कर रहा था. ठीक, इवन दो फुली फंडेड PhD डायरेक्टली आफ्टर बैचलर्स इन न्यूजीलैंड, लाइक अनहर्ड ऑफ, ठीक है, लाइक नहीं मिलती. तो इट वाज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बट मुझे लगता था मैं चूतिया हूँ. ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई सब लोग करोड़ों अरबों की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, और मैं यहाँ क्या PhD कर रहा हूँ. तो ऑल दोस वही दोस्त जो सुट्टा मांगते थे. हाँ वही, मतलब 5 बजे सुट्टे के लिए रोते थे. अभी भाई ऐसे बात करते हैं कि 10 करोड़ का यार वो मिल रहा है 5% के लिए, ये वही वैसी बातें करते थे. तो वो सब भी था. एंड देन द PhD टॉपिक दैट आई वाज डूइंग इट ऑन वाज वाइब्रेशनल acoustics in mechanical engineering. So even though I was good at it, I did not love it. I did not love engineering or that topic. तो ये सारे factors came together, and
that led to a decision कि हाँ ठीक है, I should just quit and go back and join this startup called Cubicle Labs. Now in hindsight, Cubicle Labs did not work out very well. तो मुझे कभी लगा था कि हाँ भाई गलती की, but अब नहीं लगता है. So there was a time I thought, okay, maybe I should have just done my PhD, but now I'm glad I did not. 23-24 साल में काफी कूल टैग होता है वैसे डॉक्टर। हाँ एग्जैक्टली भाई, 23 साल में डॉक्टर तरुण जैन होता तो अच्छा ही रहता, बट ठीक है अभी. So, like, by the way, I'm still planning to do a PhD in the future, in a Without different. dropping out this time। Yeah, I mean, this time also, I don't really care. I don't really care about it as a career choice. So, but I will do it. तो इस पे आफ्टर दैट जब स्कूबा की बात हो ही गई है आपकी, स्कूबा ड्राइविंग पैशन बोल लो, लाइफस्टाइल बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, एक कौन सा एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था जो थोड़ा सा चेंज किया होगा या मूव किया होगा, एंड स्पेशली स्कूबा डाइविंग स्पेशली लेसन्स क्या लर्न कराता है कुछ, अपार्ट फ्रॉम फैंसी एक एडवेंचर स्पोर्ट के अलावा, या एक टूरिज्म और इस तरीके के अलावा क्या इसका इम्पैक्ट है आपके लाइफ। हाँ तो like scuba diving is something I absolutely love. Like ठीक है, I'm very very passionate about it, and I think everyone should try it and maybe do it more than once. Don't do it just for taking pictures. Once you get into it as a lifestyle, you are just amazed by the beauty of the world underwater. Just being able to breathe underwater, just that feeling, oh fuck, पानी की जो मैं सांस ले पा रहा हूँ, that is amazing. You being able to move in an extra dimension, कि like सांस ली ऊपर गए, सांस छोड़ी नीचे आ गए, that is amazing. The way the light plays with water, and then the whole marine life, each and every individual fish or snail or some mollusk or copepod or anything, right, has its own behavior, and it's wild, and you can go and actually see that behavior, interact with them. You always interact passively, but still just being able to be there and look at them is amazing, and it teaches you a lot. I mean, it makes you calm, like especially now when I dive, it's so calm for me, it's so meditative, and it just keeps me healthy mentally and physically, right, most importantly mentally. नाइस, इट्स अ मतलब एक अलग ही आपने जॉनर चुन लिया है, जो मतलब मेंटल पीस एक ऐसे टॉपिक है जो काफी स्पोकन अबाउट नहीं है इंडिया में एटलीस्ट, एंड पीपल who find mental peace at something, I think they should definitely do it, क्योंकि उससे ऊपर कुछ भी नहीं। Apart from that, I personally know you, so I know कि कितना move किया है। I've seen the tattoo that you have had of octopus, Many there's a tattoos. interesting story। Yeah, there's Nice। I have many tattoos now. Fun fact you might not know, I also learned how to tattoo in during COVID. So I am kind of a tattoo artist as well now. Just Let one. me guess, you also tattooed yourself, is it Yeah, I right? have tattooed myself Oh my at god। multiple places. All over my legs. I have tattooed myself now. You were talking about, can you give an example how एक एक एनिमल का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है, कोई भी एक उसका आप बता सकते Huh, so like this, like when you talk about marine life, this it's so amazing. Like for example, octopus, right? It has like 8 legs, it has blue blood, it has 3 hearts, it can camouflage. There's a specific species called mimic octopus. Just Google it one day and watch the YouTube video. It's so smart, it can mimic other species. Like it will, go inside sand, bring one arm out like this, one arm out like this, change the color, texture, pattern, and make it look like a sea snake. So, an animal being able to mimic another animal is like mind blowing, right? And then there's like puffer fishes, they have an individual personality. You can watch this BBC ka video where puffer fish will make an art on the sand floor. During reproductive season, they will actually make an art to attract the female. And then the clownfish, which is born, all clownfish are born as male. They go through an actual physical sex change for reproduction. It's amazing what you see underwater and what you find underwater. So just once you start getting into diving and you want to learn more, and it's just more and more fascinating, and I can keep going on. हैं? We need to have a different podcast for that। About scuba diving, so you speak very highly about it, and not just as a recreational activity, whatever I've heard from you.
Well, as I know, it also has a significant impact on conserving, ocean life. या फिर बहुत सारे अदर इम्पैक्ट आपका नॉलेज बढ़ाता है लोगों को और ये सारी चीजें करता है. How significant do you think, scuba diving का role है? Does it play on ocean conservation, sustainable living, etc.? Yeah, so like when you talk about scuba diving, I have to like make it very clear that as an industry, like scuba diving is at the end of the day an industry and it's a tourism industry. It does have a negative impact on marine life or the coastal area. And also it depends on when it's commercial. There are some good dive centers, there are some bad dive centers. If you go with a bad dive center, they will not try to protect the marine life. You will see people grabbing on corals underwater. There's a lot of stuff. There's a lot of things that are wrong with this industry, right? But there's a very famous saying that you will only conserve what you love and you will only love something that you can understand. So scuba diving is a vehicle for people to admire this amazing life. And most of the people, like 90% of the people who go scuba diving, will just fall in love with it, and then they want to conserve it. And once you make it as a lifestyle, all divers are always talking about is, oh, don't use plastic straws, don't, fishing nets are everywhere. And as you keep on doing this, there are opportunities within diving to volunteer and help in coral restoration, beach cleanups or underwater cleanups, or taking out the big fishing nets that are left behind. So slowly it opens up this whole world of marine conservation for you. It's your entryway. If you don't dive, you will never even think about marine conservation. Correct. Now that you're speaking about it, I'm also thinking about taking dive out for Oh, sure. you should. आजा भाई आजा. श्योर आपके पास ही आऊंगा. और अभी इसके बाद थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ पे भी आते हैं. थिंग्स दैट गिव यू मनी एट दैट, चाहे बहुत सारी चीजें होती हैं, अपनी एक लाइफस्टाइल जीते हैं, उस लाइफस्टाइल को जीने के लिए भी एक मनी जनरेट करना जरूरी है, गिवन द वर्ल्ड अराउंड अस, राइट? तो इसमें आई वाज चेकिंग आउट योर प्रोफाइल एंड मोस्टली आपने इंटरनेशनल कंपनीज में काम किया हुआ है, कंपनीज दैट हैव अ डिफरेंट कल्चर देन इंडियन कंपनीज. यू स्टार्टेड आउट विद इंडियन कंपनीज एंड देन सेकेंडली आपने काफी ज्यादा डिजिटली काम किया है और रिमोट काम किया है, टू बी प्रिसाइज. एंड यू लिव also lived like a digital nomad sort of, कि आप काम कहीं कर रहे हो, रह कहीं और रहे हो, कुछ महीने बाद या सालों बाद आप कहीं और. So give us something, make us understand पहले तो ये इंटरनेशनल कंपनीज को अगर किसी को करना है तो कैसे करें. दूसरा, then we will dwell deeper into other parts. So like basically if you're asking me for tips for getting a remote job in international companies, the only actionable thing for everyone is that they just apply, right? There's nothing wrong with applying. Okay, what's the worst thing that can happen is you will get rejected, right? So effort तो मारना ही चाहिए, ठीक है? तो पहले apply करो. Now while you're applying, you can of course be smart or much smarter. अब तो AI का जमाना है, chat GPT है, अपने cover letter बनवाओ और ये सब करो. So like make use of all the tools you have available. Be smart about applying, but don't expect a lot initially. So like it takes time to build a network and to build the connections and to get to the level that where I am right now. अब तो फिर भी remote jobs काफी easy हो गए. A lot of companies are open to it. But when I started, I worked in Indian company. And I remember I went to Bangalore for a month. I got a full-time gig in Bangalore. I did an amazing job. And then I said, okay, now, I don't want to work here. I want to work from Goa. So either you can, I will leave, or you can give me less money and let me work from Goa. So there are multiple ways to do it, but I wanted a remote job and I just aimed for it and I got it, and it was paying me much less. But then you slowly you keep on doing a good job. As long as you're doing a good job, you're friendly with your colleagues, with your boss, things will open up for you, right? So the guy I used to work with in that company went to Finland, right, and started working for some other startup. And then because I did a good job, he reached out to me saying, hey, I need help with this. Do you want to freelance? I said yes. So, and then you freelance, now 5 more people. You work more, 10 more people.
and you keep on applying to new places which you don't know. Maybe you will get an interview, right? You never know. So just keep on grinding and you will get a remote job eventually. It will not pay you as much as you might be getting paid right now, but after a couple of years, you will be happy. Like you will get what you need. एंड आई थिंक इस पे जो आप बोल रहे हो सबसे बड़ा क्रक्स ये है कि कुछ तो करना पड़ेगा, बैठे बैठे बस सोच लेने से चीजें नहीं हो जाएगी, राइट? क्योंकि लाइक अपने आपने सीनियर अगर को मैसेज कर दो, मतलब हाँ नेटवर्क में ही किसी को मैसेज करके पूछ लो कि भाई रिमोट जॉब है क्या कोई. इफ यू नो समवन वर्किंग इन SaaS कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज, जनरली स्टार्टअप्स एंड ऑल, दे हैव रिमोट जॉब्स. स्पेशली एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द डोमेन. लाइक ऑपरेशंस में रिमोट जॉब नहीं मिलेगी, बट अगर मार्केटिंग में हो, कोडिंग करते हो, डेवलपर हो, डिजाइनर हो, तो रिमोट जॉब मिल जाएगी. सो जस्ट आस्क समवन एंड यू विल फाइंड अ गिग. करेक्ट। एंड इस पे डिजिटल नोमैड वाली जो लाइफ है आपकी, अपार्ट फ्रॉम डूइंग रिमोट जॉब तो घर से भी लोग कर ही रहते कोविड के टाइम पे, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट एंड व्हाई डिड यू चूज दैट एज अ लाइफस्टाइल? ये चीजों पे थोड़ा वी वांटेड टू हाँ, हैव एन सो अंडरस्टैंडिंग। like remote job is very empowering according to me. It allows you to explore, like there's so many hobbies and things I'm able to explore and pick up just because I have a remote job. So I will never go back to a desk job now, like the kind of lifestyle I've lived. But talking about being a digital nomad, which is like living away or moving away, it's not for everyone. Like I do miss my friends sometimes. Like you have to, every time you move, you make new friends, which करेक्ट, might be amazing for some people, but at some point it's also like, oh, you miss old friends जीरो as से well. स्टार्ट करना है। So it has its plus and minus. At the end of the day, you have to just remember, like, you want to be happy. So and beauty of remote job is कि भाई आज यहाँ पे हो, एक महीने बाद अच्छा नहीं लग रहा है तो वापस घर चले जाओ. So it just gives you that freedom. So yeah, करेक्ट। for me it's working out great. I love diving, and there are very few places where I can stay and dive every weekend. That's why I'm here. एंड इस पे अगर हम थोड़ा और इधर जाएं तो लोगों को काफी सारा, मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे लोग ऑफिस जॉब में भी बहुत खुश होते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन एज वेल। बहुत Of course. अलग अलग लोग के लिए अलग अलग चीजों के लिए बने। Yeah. I mean, I think office jobs are great. I mean, I see the plus of that as well. Not for me. I mean, but I understand, just going to office, meeting friends, working with your colleagues, going on sutta breaks. It's good for brainstorming. It's easier to brainstorm sometimes when you're in office. And करेक्ट, remote job does require a lot of discipline, right? You can always open YouTube and you can always do anything you want when you're doing a remote job. So it does require a certain level of discipline as well. So it's not for everyone, but if you are able to do it, I think it opens up a lot of possibilities. and on other part that I was discussing, you have multiple international roles, companies जहाँ पे international companies, YC backed, मतलब Y Combinator backed companies, etc etc. ये आपका पर्सपेक्टिव कितना चेंज करता है? मतलब आपने इंडिया में भी काम किया फ्लिपकार्ट में, क्यूबिकल्स में, राइट? एंड देन यू हैव आल्सो वर्कड एंड ऑन वेरियस डिफरेंट रोल्स एट डिफरेंट कंपनीज। आपका पर्सपेक्टिव अबाउट बिजनेस या अबाउट डूइंग योर वर्क कितना चेंज होता है, या क्या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? So I don't think a brand name matters in like your learning experience. So like YC is not anything special. Let me put it that way. Like there's nothing special about YC, working at a YC company, other than the brand name when you apply for the next job. Right. So when I apply for the next job, having worked in YC company has a brand value. But other than that, what matters is mostly like uh, the kind of work I do. You have to be always on top of things, right? And you have to learn multiple trades, right? So I enjoy it and I'm always learning. So with these international companies or like starting from cubicle labs, it matters who you are learning from, right? If your manager is good, you want to grasp everything from your manager and the colleagues around you. They always know करेक्ट, something that you don't. And as long as you can within a very short period of time grasp all those abilities, you are set for the next gig, right? करेक्ट, So I think there's no difference between Indian versus international companies as such. The difference is in time zones, and you of course talk in English all the time. करेक्ट, Other than language and the time zone, I don't see any much of a difference. At least in the startups that I have worked with, the culture is always open. If they're offering a remote job, most of the time they're open. They are not micromanaging. I don't work with companies that micromanage. I am in a stage where I can lay out my own
terms and conditions before joining a company. So yeah. कुछ सालों पहले you also co-founded a company which was about doing various educational stuff in marine life and ocean life, etc. etc. How, मतलब क्या क्या स्किल या क्या क्या चीजें उस टाइम पे आपने सीखी थी? I think you co-founded it with one of your friend. And what was your thought process? क्या एक अलग चीज आपने सीखी या what how it prepared you for आगे की journey of it? Yeah, so the startup we founded at Edumarine, yeah, we had a very novel idea. It was around, again, centered around my passion for marine conservation and education. What I realized very fast was like any NGO or conservation kind of thing in India is very difficult. And like if you're dependent on government grants or government institution and project, it's the bureaucracy, at least at that time, was just so slow. It was Correct. taking years to get an MOU signed and all that stuff. So all those things combined, I think at some point we just lost the drive, and we were like, like I think we can do a better job with while we are earning money, right? Rather than just keep spending our time with no money. So you have to make those hard decisions when you're starting your own company. So how long do you want to actually just keep on pushing, and when to quit? So I did realize that, yeah, that idea would never make money enough for it to, keep on running on itself, right? Got it. It won't Uh, get critical anytime soon. So yeah, as an entrepreneur, you have to realize that, what you want to achieve, what the next goal is, hit it. Either you raise funding or you make some money. And you have to be very practical about it. And it comes with got it. time and experience. There's no hack for time. तो आप कितना भी पैसा दे दो आपको नहीं मिल सकता. मतलब Correct. टाइम ही तो सिखाता है वो धीरे धीरे. नहीं, आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ दैट. दैट्स व्हाई मतलब मुझे भी काफी जो लोग 20 साल 30 साल एक्सपीरियंस रहते हैं, मतलब मैं ऐसे भले ही काम कुछ भी कर रहे हूँ बट आई डू नॉट डिसरिस्पेक्ट देम बिकॉज नहीं टाइम है. वाला जो पार्ट उनका लर्निंग है वो कभी नहीं सीख हाँ, सकता टाइम बंदा. का एक एज है, बट उनका काम चूतिया हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं. 20 20 30 30 साल ज्यादा एक्सपीरियंस वो तो है. बेकार काम करते हैं, इट्स अ फैक्ट. ठीक है. बिकॉज वी नो मोर, वी हैव बीन, वी नो सम टूल्स मे बी मोर. तो मे बी अभी जो करेक्ट जूनियर है उनको कुछ टूल्स हैं जो मेरे से ज्यादा आते होंगे, करेक्ट राइट? करेक्ट इट्स फाइन. But as long as I am on top of things, like everything that is happening around me, and you're always smart, करेक्ट. then experience will just give you that extra edge. इस पे since the whole podcast is bringing in IIT Guwahati, alumni who are doing various things, मचा रहे हैं इधर उधर अलग अलग जगह पे, अलग लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अलग तरीके का अनकन्वेंशनल लाइफ जी रहे हैं. Wanted to know how or what IIT Guwahati's role was in your career. क्या महत्व उस चीज को देंगे या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कुछ चीजें आपने उससे सीखी या उसके कारण भी. would love to know that. Yeah, मतलब IIT is like, of course, a very pleasant, memorable time of my life. ठीक है, like everybody else, I am assuming. ठीक है, तो like direct impact on career education का उतना नहीं रहा अब. But it's not about that at all. Like IIT की जो education है ना, या IIT में रहना, it's just about you are with so many smart people. So the network you get and the opportunities you get while you're in IIT. Like I was able to go to New Zealand for internship. I got a campus placement in Flipkart because my seniors were already there or whatever, right? मुझे second year में भी internship करने को मिली. Then the opportunities around, like you can explore dramatics and other clubs and Olympiads and web development or whatever. The opportunities is what makes you grow very fast, and it helps you down the line, right? डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी नहीं है. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स मरीन बायोलॉजी. मैं पीएचडी उसमें करने की सोच रहा हूँ, तो उतना इम्पैक्ट नहीं रहता है. लाइक आफ्टर 7 8 years nobody asks you Correct, for your education. ठीक है, तो correct. now it doesn't matter if I was in IIT, but still I have that network. My peer group is all in great companies, right? All of my peers and colleagues and everyone is working and doing a good job somewhere. So you can always talk to them and depend on their experience. And that is what IIT is all about. तो इस पे तो आई टोटली अग्री. मेरी भी पहली जॉब कैंपस प्लेसमेंट भी मेरे सीनियर्स के वजह से हुई थी. एक आप थे कि उसमें मैंने से. ही किया था वे. एंड आफ्टर दैट मैं जो उसके बाद जहाँ ज्वाइन किया था वो भी सीनियर के हिसाब से हुआ था. उसके बाद वाली कंपनी भी दिव्यांश भैया उन्होंने कराई थी.
then I moved to Picker, वहाँ पे भी spoke to Gaurav and then joined it. So network का तो definitely I think, and that is the reason we opened this particular book, कि यहाँ पे लोग भी alumni को जाने and they can reach out. किसी को आज के डेट पे स्कूबा डाइविंग या कुछ समझ ना हो तो they can at least know you and now reach out to you. Just हाँ podcast. बिल्कुल यार, आई मीन वो एंड पूरा मोस्ट आईआईटी लाइक अपने जो एलुमनाइज हैं दे आर वेरी फ्रेंडली यार, करेक्ट करेक्ट. मतलब सो मुझे वो भी आप लोग चाह रहे थे. मैंने एज अ स्टूडेंट भी मैं भी 5 साल 6 साल पुराने कॉलेज के लोगों को नहीं जानता था. आप लोग जानते होंगे बट मैं नहीं जानता था. इट इज डिफिकल्ट. एक संकोच होता है. वो खत्म करने के लिए वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट. अच्छी बात है भाई। एक एक ना इसके लिए जो भी मिलेनियल्स या जेनजीज है उनको काफी ज्यादा लाइफ आई थिंक आपकी या किसी भी ऐसे अनकन्वेंशनल लाइफ अट्रैक्ट करती है. एंड वांटेड टू नो कि अगर किसी को अपना पैशन इंटीग्रेट करना है अपने लाइफ में तो किसी को भी हु इज पीपल हु आर सीकिंग आउट कि यार मुझे अपना पैशन अपने लाइफ में इंटीग्रेट करना है उसके लिए आपके क्या एडवाइस है. तो यार देख, लाइक पैशन तो एक कीवर्ड है, ठीक है, जो बहुत ऐसे फेंकते हैं कि पैशन है, बट फैक्ट ये है कि तुम्हें अभी ऐसा लगता है कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, एंड करेक्ट दैट अर्ज टू डू समथिंग यू रियली एंजॉय, यू माइट समटाइम्स कॉल इट एज पैशन। करेक्ट तो एक मैं बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि भाई इफ यू ट्राई टू टर्न समथिंग यू रियली एंजॉय इनटू अ प्रोफेशन और कैरियर, इट विल लूज सम लैकलस्टर ऑफ इट, थोड़ा तो कम हो ही जाता है, ठीक है। जितना तुम उसे रिक्रिएशनली एंजॉय कर रहे होते हो उतना तुम कैरियर बना के नहीं एंजॉय करोगे, दैट्स अ फैक्ट। इवन इन स्कूबा डाइविंग आई वर्कड एज एन इंस्ट्रक्टर फॉर अ व्हाइल एंड आई रियलाइज कि डाइविंग विदाउट दैट कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ एंड आई हैव अ लायबिलिटी एंड ऑल दैट स्टफ, you enjoy it less. But on the other hand, if somehow you are still able to implement in your lifestyle, like every weekend कर पा रहे हो या daily कर पा रहे हो, and थोड़े से प्रोफेशनल लेवल पे कर पा रहे हो, but you are not dependent on your hobby, you're not dependent on your passion, you might find it more fulfilling for you. तो unless I don't know, सबके पैशन अलग होते हैं, अगर कोई ऐसा पैशन है जो एक्चुअली में बहुत अच्छा कैरियर है तो go for it, but otherwise I would say keep on doing it every day as much as you want, but don't make it your full-time career. ठीक है. जो जितना हसीन या लुभावना ये लगता है कि ऐसा कर लेने से मैं सही हो जाऊंगा, जो पॉइंट इज कि मोस्ट मेजर टाइम्स ये होता है कि वो ऐसा नहीं होता. तो कीप At इट the end of the मोर. day, a lot of money plus passion is greater than less money and passion. समझ रहे हो? ये फैक्ट है ये, कि अगर तुम ज्यादा पैसा कमा रहे हो ना, तुम अपने पैशन को भी ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। कि मैं जैसे डाइविंग में अगर मैं सिर्फ डाइवर होता ना, तो आई वुड नॉट बी एबल टू गो टू अनदर कंट्री एंड गो डाइव, इतना पैसा ही नहीं कमाते डाइविंग इंस्ट्रक्टर। बट अभी मैं भाई जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं यहाँ रह पा रहा हूँ। अ डाइविंग इंस्ट्रक्टर ऑन सैलरी कैन नॉट लिव ऑन अ बीच साइड प्रॉपर्टी। करेक्ट Right. करेक्ट. So I can, so like you have to understand, depending on your passion, you might want to still keep career separate, make a lot of money, and do as much as you want with your passion. And भाई अब पता नहीं 10 साल 20 साल बाद रिटायर होके देख लेना। आपने एक बार लिंक्डइन पे भी आपने मेंशन किया था, यू हैव लेफ्ट हैंड टू माउथ आल्सो एट सर्टेन पॉइंट्स, स्पेंडिंग मोर ऑन cigarettes or other activities than on food, right? And can you tell more about that phase? मतलब बहुत ही यूनिक फेज हुआ होगा यार. मैं भी कभी भी डिफिकल्ट फेज से होता है, एट द एंड जब वो खत्म होता है तो एक काफी ज्यादा लर्निंग और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है यार, ये झेल लिया तो कुछ भी झेल. कैन यू हाँ यार टेल अस मोर मतलब अबाउट. आई एम हैप्पी कि वो जो टाइम था इट हैपेंड नॉट लाइक इट हैपेंड वेरी सून आफ्टर कॉलेज। लाइक ऐसा नहीं होता कि मेरी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। तो लाइक कॉलेज में जैसे लाइफस्टाइल होती है ना कि बहुत अपन गरीबी में जी ट्रू. लेते, लाइक हाँ, लाइक ओल्ड मॉन्क में खुश रहते हैं और सस्ती दारू करेक्ट. सस्ते नशे, और बस खाना भी क्या है, बिरयानी खा ली एक टाइम या मैगी खा लिया, खुश है, ठीक है। और घर में करेक्ट ज्यादा ऐसा फैंसी फ्रिज नहीं चाहिए, फैंसी बेड नहीं चाहिए, लाइक लाइफस्टाइल बहुत हमारी फ्रूगल होती है, करेक्ट. राइट। एक्चुअली में यू रियलाइज कि ज्यादा पैसा चाहिए नहीं जीने के लिए, ठीक है, जैसे हाँ 10-15 हज़ार महीने में हो जाता है अच्छे से। तो या इट हैपेंड एट दैट टाइम वेयर आई वाज लिविंग, आई क्विट क्यूबिकल, आई वेंट टू गोवा, ठीक है। हाँ I didn't have a really job. I was doing this startup. हाँ. But now, thankfully, I did not have any family responsibilities, right? I did not have any responsibilities. तो मेरे को ऐसा पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी। As long as I can survive, I was happy. तो हाँ, उस टाइम पे मैं यार मतलब डाइविंग का भी काम करता था, तो 1,000 रुपए मैं जाता था सुबह से शाम, लोगों को डाइविंग कराता था, वो डीएचडी जो गोवा में कराते हैं, 1,000 रुपए शाम को हाथ में मिल जाते थे। तो इट वाज
good enough lifestyle. I mean, I was not living a very luxurious lifestyle. बस एक सस्ती सी स्कूटी थी सेकंड हैंड, लाइक 8,000 रुपए में मैंने स्कूटी खरीदी थी, तो ऐसे जी रहा था मतलब, एंड आई वाज हैप्पी। ठीक है, बट अब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक बार जब तुम ज्यादा पैसा कमाने लगते हो ना, तो भाई लत लाइफस्टाइल लग बदल, जाती और फिर हाँ है। लत लग जाती है, तो फिर तो डिफिकल्ट होता है। अब मतलब अब मैं ऐसे सस्ती गाड़ी और ये सब नहीं होगा, अब एसी चाहिए पूरा टाइम, उस टाइम तो पंखे में जीते थे। तो करेक्ट, इट ये बात तो, चेंज। इट हाँ तो चेंजेस यू फ्रॉम विद इन एज वेल। बट इट टॉट बट मी कहीं ना कहीं, हाँ, कि या, हाँ पैसे की जरूरत, मतलब अगर कुछ हो गया ना भाई, हाँ, लाइक कुछ हो भी गया ना, तो आई नो आई कैन ऑलवेज सर्वाइव। लाइक वो तो आ गया है कि भाई 10-15 हज़ार रुपए चाहिए होते हैं, उतने मेरे पास ऑलरेडी सेव कर लिए कि मैं अगले 20 साल जी लूँ। करेक्ट। और बस इसमें एक चीज जो मुझे सबसे बड़ा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब मैं पर्सनली फील करता हूँ, वो ऐसे फेसेस जब आते हैं लाइफ में, तो उसके बाद ना एक कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हो जाता है ना, कि अगर कुछ हो गया तो भी अपन सेट है, मतलब कुछ ना कुछ कर लेंगे लाइफ में, वो टेंशन नहीं है। दैट अलाउज यू टू टेक बिगर रिस्क, एंड हाई रिस्क हाई गेन का तो पूरे दुनिया में ये फंडा है। तो तो आई थिंक दैट, रिस्क पे भी मैंने आई हैव रियलाइज्ड इट्स इजियर टू टेक रिस्क व्हेन यू आर अर्निंग लेस। ठीक है, ये करेक्ट, मेरा भी अभी ये सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है मुझे, कि जब से मैंने ये ज्यादा सैलरी मिलने लगी है ना मुझे, अब आई एम फाइंडिंग इट मोर डिफिकल्ट टू टेक अ बिग लीप। एंड तो लाइक अभी जो सैलरी मिल रही है ना, अब मुझे छोड़ने के पहले ज्यादा सोचना पड़ेगा मुझे। व्हेन आई वाज मेकिंग 20-30 हज़ार, 50 हज़ार महीना, 60 हज़ार महीना मिल रहा है, इट्स स्टिल इट्स फाइन कि ठीक है, छोड़ूंगा 4 महीने बकचोदी करूंगा, स्टार्टअप करूंगा, नहीं चला तो फिर मिल जाएगी जॉब। करेक्ट, करेक्ट, नहीं ट्रू बिगर है, काफी अमाउंट ट्रू है। कि अब तुम करोड़ों कमाने लगोगे ना, तो उसके बाद तुम नहीं छोड़ पाओगे भाई। तो करेक्ट। yeah, it's hard, but yeah, so it's a learning for everybody who's listening. Yeah, ki I think at a younger age and when you're making less money, it's easier for you to take risk, and so you should explore more. Eventually, once you are at a stage in career where you are making big bucks, you will find it harder, and you might have more responsibilities as well. So I think that brings, to the end of our podcast. With really happy, understanding your lifestyle, understanding कि आपने क्या क्या किया है, and I'm sure multiple लोग हैं, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी आपको कवर करने के लिए, क्योंकि आपका एक अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल सबको जानने का क्यूरियोसिटी होती है, एंड प्लस एक इंस्पिरेशन भी मिलेगा काफी लोगों को जो थोड़ा अनकन्वेंशनल ऑलरेडी चले गए हैं, या फिर जाना चाहते हैं कि यार किसी एक ने किया हुआ है हमारे जानने में, या हमारे कॉलेज से, या किसी भी एक कॉलेज से इंडिया से, तो वी कैन ऑल्सो डू इट।